हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। सो आज क्लास रे हम देखिबा एनफेस्ट थ्योरम है ना, क्वांटम मैकेनिक्स रो तुम एनफेस्ट थ्योरम। तो एनफेस्ट थ्योरम एक्चुअली कौन ना से कौन भाया काम करे, गोटे टाइप रो ब्रिज भाया काम करे। ठीक अच्छे, का भितर ना क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स सला। तो क्लासिकल मेकानिक्स रे गोटे पार्टिकल जब मूव करछि तार मोमेंटम रो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन हबो हला, क्वांटम रे कौन हबो। सो नॉर्मली से विषय रे से जो रिलेशन देखाए हला, रिलेशन देखाए। ठीक अछि। सो हमें देखिबा चलो। तो यार दीटा प्रूफ अछि। फर्स्ट हला तुमरो टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन हला, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू px मोमेंटम बाय मास। आ गोटे ही गला तुमरो टाइम डेरिवेटिव ऑफ योर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ही गला तुमरो ना का सहित समान तुमरो फोर्स सहित समान हैला। ए दीटा हमको प्रूफ करबा अछि। तो चलो फर्स्ट प्रूफ हमें देखियो हैला। हमें using Heisenberg equation of motion है ना। Heisenberg equation of motion हमें लास्ट क्लास से कौन देखितले, डी बाई डी टी ऑफ ए any dynamical variable I by h cross expectation value of कारो ना h a रो commutation plus del a by del t रो एक्सपेक्टेशन वैल्यू এটা দেখিতলে আমি হিজেনবার্গ ইকুয়েশন অফ মোশন রে। ঠিক আছে। তো फर्स्ट आम एक्स जेहेतु पुट करी प्रूफ करवा, तो आम नहीं जा पुट ए इज इक्वल टू एक्स है पोजिशन जार ऑपरेटर कौन हो पे एक्स कैफ। ठीक अच्छे, यार ऑपरेटर ही गला। ओके, सो इक्वेशन में कौन जो डी बाई डी टी ऑफ एक्स रो एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू I by h cross expectation value of h and x commutation plus dou x और del x by del t रो expectation। ठीक है, बट हमें जान जो पिले पोजीशन टा पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। सो तुम्हारा कंसर्न ही जो पोजीशन टा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो कौन जो डेल एक्स अपन डेल टी रो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू टा एवरेज वैल्यू टा जीरो हो जो। ठीक अच्छे, कहीं पोजीशन कन्स्टांट हो गला विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू जीरो हो। सो इक्वेशन कौन जो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एच एक्स यही गला आमर इक्वेशन। ठीक अच्छे। सो लेट्स से इक्वेशन वन दे दियो, सॉरी इटा नुह इटा को इक्वेशन वन दे दियो, इटा इक्वेशन टू दे दियो है ना, फॉर द रेफरेंस। ठीक अच्छे, बट एच एक्स रो तुम्हारा कॉम्बिनेशन एस एच इज नथिंग बट तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो दैट इज योर पी एक्स स्क्वायर बाय एम प्लस वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी है आउट के है एक्स। ठीक अच्छे, तो या को हमें लिखिपर कौन लिखिपर पिला सॉरी ये टू एम। तो या लिखिपर आम जदि मु
এটা এক্সট্রা করে লিখি দেবা या सहित थोड़े x आउ या सहित थोड़े x तो लिखि परिबा ଆମେ 1/2m ala commutation of कारो ना px square x ala plus এটা जो vx सॉरी vx ala vx आउ x ঠিক আছে सो एबे 1/2m এটা এই যে তোমার px into pxx px स्क्वायर अछि तो px डॉट হৈ যাব तो प्रोडक्ट रूल एटी जदी पुल्ला तो px x pxx px रूल प्लस कम्पिटिशन ऑफ v आउ x bx जोटा देखो ठीक से देखो ये तुम px स्क्वायर अच्छी तो या लिखि पारि px डॉट px है px डॉट px तो यार प्रोडक्ट रूल पढ़ले ये या सहित थोड़े है ये रहा ये या सहित थोड़े है ये रहा तो प्रोडक्ट रूल ये पढ़ला प्लस ये पार्टा रहा ये ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट ये करदे तुम है 1/2m यार वैल्यू हो गला IH क्रॉस है pxx तुम कम्यूटेशन वैल्यू हो गला IH क्रॉस आ यार हो सॉरी माइनस IH क्रॉस यार भी माइनस IH क्रॉस है तो या लिखि पार px इंटू माइनस IH क्रॉस है प्लस माइनस IH क्रॉस px प्लस vxx सो एटा ही गला तुमरो that implies h is equal to 1/2m into minus 2 into IH cross into px okay plus जदि ये vxx रो जदि मु vxx रो जदि ब्रैकेट उठे देबी मु है कम्यूटेटर ब्रैकेट ताले हिजो एटा vx minus xb this is nothing but 0 तो एटा हिजो implies hx रो equal to 2 getting cancel এটা হিজো h क्रॉस बाय आई ऊपर अच्छी तो मु तल को जदि नहीं आसुची एटा प्लस हिजो h क्रॉस ओपन आई m को m रहिला I m h क्रॉस ओपन I m px h क्रॉस I m h क्रॉस ओपन I m px है एटा ही गला तार वैल्यू कम्यूटेशन ऑफ h आउ x रो वैल्यू ठीक अच्छे सो आमे कम पाइले ना x px इज इक्वल टू को जदि तुमर pxx इक्वल टू pxx जोटा थिला तार ही उतला कोन यार माइनस IH क्रॉस हला यार वैल्यू माइनस IH क्रॉस हला ई जगह रे तो सेथि पई तुमर कोन गेला ई हम पाइले हला तो फाइनल एटा हला तुमर फाइनल आंसर ता याकू मन रखि थाओ हला नेक्स्ट जीवा हमें तो यार जदि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू काट दोचे h x रो कम्यूटेशन रो ताले हमर कोन जो एटा कांस्टेंट यार एटा बाहर को पळे आसला h क्रॉस अपन I m बाहर को पळे आसला तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एटा गला px है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ ये गला px ठीक अछि एबे
एबे यार जदि एटा हला इक्वेशन नंबर आमे देथिले इक्वेशन नंबर 3 दे दबा ना तो जदि आमे इक्वेशन 3 रो जो वैल्यू पाइले आमे ई इक्वेशन रो पुट करबा ताले आमे कम पाइबा तो इफ नाउ putting the value of equation 3 into in equation 2 we'll get d by dt of x expectation value equal to I h cross into h h x रो कम्यूटेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू आमे केते पाइछु हला एटा तो पुट कर दो h क्रॉस अपॉन im into px हला h मरि गले i मरि गले कम पाइले आमे that implies d by dt of the rate of change of your position is equal to हला average value or expectation value of momentum divided mass हला एटा ही हमको प्रूफ करबा थिला तमरा फास्ट देखो the rate of change of your position is equal to momentum divided expectation value of momentum divided by mass ठीक अछि एबे एबे जीवा हमें तमरा सेकंड प्रूफ को हला सेकंड टा हमर कोन थिला हमर प्रूफ करबा थिला सेकंड टा ना d by rate of change of your position sorry momentum is equal to expectation value or average value of your force okay so second tomorrow second theorem ta kon ame proof kariba na that is your rate of change of your momentum is equal to expectation value of your force ठीक अछि ए जिंस हमको प्रूफ करिया अछि तो स्टार्ट करिया सो हमें जदि हिजेनबर्ग इक्वेशन रे हमें मोमेंटम नहीं कि लिखिबा ताले कोन हिजो d by dt of px is equal to I upon h cross expectation value of h px commutation plus dou px by dou t এটা হই গেল তোমার ইকুয়েশনটা যেহেতু মোমেন্টাম হলা সিন্স মোমেন্টাম is not explicitly function of time हला जेहेतु मोमेंटमटा टाइम इंडिपेंडेंट तो तुम्हारा del px upon del t रो एक्सपेक्टेशन वैल्यूटा केते हिजबो 0 हिजबो एटा जे 0 हिजबो ताले हम पाइबा t by dt of px is equal to I upon h cross h px हला हम एतिकी पाइले ठीक अछि जदि हमरा del px by del t एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो जाउची पुट इट इक्वेशन नंबर 2 ठीक अछि सो हम इक्वेशन को सॉल्व करिवा हम कम पाइबा d by dt of px is equal to I upon h cross h px रो कम्यूटेशन रो एक्सपेक्टेशन मिल नहीं ताले या को लिखि परिबा I upon h cross s रो वैल्यू ही गला s रो वैल्यू जब हम पकेबा हम कोन लिखिया px square by 2m plus vx px जेमती करथले हम प्रीवियस सिमिलरली सेमतिया हला सॉरी ए तुमरो एटा रहिबोनी सॉरी एमती लिखियानी एटा जी रखिबा पुट इट इक्वेशन 2 या को देचो थरे इक्वेशन 2 दियो बट हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू न नहीं की फर्स्ट एचपी रो कम्यूटेशन बाहर कर दो एचपीएक्स रो कम्यूटेशन
is equal to H is nothing but your kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. So that can be written as 1 by 2m px square bx px 2. So is equal to, we can write px square px plus bx px. So this is nothing but 1 by 2m into, this can be written as px dot px comma px plus vx px equal to 1 by 2m. Product rule जदि हमें पुट करबा एठी कोन जो पिले px plus px plus এটা bx px. समान दुईटा समान जिनस जदि आमे करबा कम्यूटेशन ताले तार वैल्यू हो 0. सो दिस इज 0. सो आमे पाइले कोन, दिस इज नथिंग बट vx px रो कम्यूटेशन है ना. vx px रो कम्यूटेशन एंड this can be written as minus of px bx रो कम्यूटेशन. ठीक अछि. सो हम कौन पाइले पिले ना px रो कम्यूटेशन is equal to minus of px vx रो कम्यूटेशन. ठीक. सो जदि हमें दी पटे हमें गोटे गोटे फंक्शन विथ फंक्शन साइ मल्टीप्लाई करबा ताहले कोन जो h px कम्यूटेशन साइ is equal to minus of px vx into psi और psi of x जेटा ले हो. तो कम्यूटेटर ब्रैकेट खोल दबा ताले कोन जो minus px v psi of x ना psi of x plus vx px psi of x है ना. तो हमें कम्यूटेटर ब्रैकेट खोल दबा. ठीक अच्छे. So px is nothing but h cross by I minus h cross by I del by del x of v vx into psi of x plus vx I h cross by h cross upon I into del psi by del x है. So it is the product rule पढ़िबो कहीं जो बोला h cross by I first bx वाला constant del psi by del x minus h cross by I h cross by I del v by del x into psi x plus v of x h cross by I del psi by del x. See ए दीटा टर्म प्लस माइनस समान अच्छी तो कैंसिल आउट हो गला. तो हम फाइनली कौन पाइले बिले that is your हम पाइले that implies
sorry h of px ro commutation h px ro commutation is equal to psi is equal to আমি পাইলে কোন না minus h cross by I del v by del x psi of x है put it equation number 3 put it equation number 3 देखो है so if the expectation value or average value of normalized state function psi is h px is equal to कौन जो यार जो expectation value psi star h px psi dx ना psi dx ठीक है जी तो यार वैल्यू दे हम पुट कर ले h cross by I psi star यार वैल्यू जो minus dv by sorry minus del v by del x psi dx है এই ভ্যালুটা পুট করা হলো এটি है এটি তো h cross I constant তো বাহার को পরে আসলা so h upon I है এতে মানে কোন यार এতে মানে গেলা expectation value of minus del v by del x minus del v by del x है तो यार expectation value equal to এতে কি পাইলে put that implies h px रो commutation रो expectation value এতে কি পাইলে put it equation 4 है put it equation 4 তো এই equation 4 रो value আমি যদি previous equation রে আমি পকে দেবা এইটি পকে দেবা equation 2 রে so now using the value of equation 4 in equation 2 will get compare that is your d by dt of px that is dt of px is equal to tomorrow h px raw expectation commutation or expectation value এটা পাইতলে তো আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন রে দেখো হ্যাঁ so is equal to that implies d by dt of expectation value of px is equal to আমরা কেতে পাইলে না h cross I oh sorry এটি h cross I আমি I by h cross ছাড় দিয়েছি h cross एक मिनट আমি I by h cross ছাড় দিয়েছি এটি I by h cross আছে আমি ছাড় দিয়েছি I by h cross তো তাহলে I by h cross into এর ভ্যালু হয়ে গেল h cross by I minus del v by del x is not it so এটি h cross মরি গেলে I মরি গেলে that implies d by dt of px is equal to minus del v by del x expectation value ठीक है जी minus del v by del x which is nothing but negative gradient potential gradient is nothing but your force the force expectation value equation number 5 hence I'm a compiler hence d by dt of px equal rate of change of momentum is equal to force tomorrow expectation value this establish EHRENFEST EHRENFEST
theorem in one dimension. So যদি in 3D ଯିବ in 3D ହେଲା in 3D ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନଟା ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତମର ଏଇଟା ହେଲା x ଜାଗାରେ ତମର r ହେଇଯିବ px ଜାଗାରେ p ହେଇଯିବ ହେଲା ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ ତମର d/dt of r is equal to p upon m ଆଉ ତମର ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଇଯିବ d/dt of p is equal to f d/dt of p is equal to f এইটা ହେଇଗଲା ତମର in 3D ହେଲା so this is all about your EHRENFEST theorem ହେଲା so next class ରେ ପୁଣି ନୂଆ ଟପିକ ଦେଖାବା thank you